इश्क तेरा वो दवाई जो रगों में दर्द लाई, सब किया फिर भी खुश तू हो न पाई। तू बता दे थी मुझ में क्या बुराई, तू बता दे थी मुझ में क्या बुराई, तू बता दे थी मुझ में क्या बुराई, जो मुझे आधे रास्ते छोड़ आई। Beautiful. So, guys, this was Shashwat Singh with us on ABP Live and ENT Live. I am Divya. कोई बुराई नहीं थी गाने में, कोई बुराई नहीं थी। Thank you, Divya. इनफैक्ट बहुत प्यारा था। Thank you so कैसे हो शाश्वत आप? All good. How are you? आई एम वेरी गुड। बुराई को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ये बताओ, क्योंकि कमेंट्स में तो मैंने बहुत प्यार देखा। Yes, everyone is loving it. They are बहुत प्यार दिखा रहे हैं मतलब गाने के लिए, एंड सरप्राइजिंगली वी रिलीज्ड इट बिफोर वैलेंटाइंस डे, क्योंकि दिल टूटते भी है ना हमें। वो मैंने देखा कि वैलेंटाइन वीक खत्म होते ही ब्रेकअप करा दिया आपने। सो नहीं, मैंने पहले ही कर दिया, मैंने पहले ही डाल दिया। मैंने फिर बोला कि जिनके टूटने वाले हैं, उनके लिए पहले से है। तो नो, बट थैंकफुली नो, नन ऑफ द बैड न्यूज़ आई गॉट ऑन माय फीड। सबको गाना बहुत पसंद आया एंड दे शोड अ लॉट ऑफ लव, तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके अच्छा, इस गाने में ऐसा क्या था मतलब बाकी गानों से अलग? हर एक गाने में मुझे लगता है आर्टिस्ट जो भी कुछ सिलेक्ट करता है, कोई प्रोजेक्ट हो गया या फिर एज ए सिंगर कोई गाना हो गया, कुछ उसमें एक अलग फैक्टर दिखता है, तभी उसको हाँ बोला जाता है। बुराई में ऐसा अलग क्या था? तो मतलब इफ़ यू लिसन टू इट, द राइटिंग ओनली इज़ वेरी डिफरेंट, है ना। जो अप्रोच है, सिद्धांत कौशल हैज़ रिटन द लिरिक्स। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने लिरिक्स को ही पढ़ा तो आई वाज लाइक कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, क्यों ऐसा ऐसा किसने क्या करा आपके साथ जो यू नो। बट देन आई रियलाइज्ड एवरी वन गोज थ्रू इट, some kind of heartbreak, and it could be with a loved one of any relation, jab you don't get a closure. So this song was about closure, and this was the first time I got to be a part of something like this. So when I read the lyrics and heard the melody, Haroon Gavin are the composers, I was like, ये तो करना है। ये गाना तो डेफिनेटली रिकॉर्ड किया। ओके पर वैसे आप जब कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट करते हो, हाँ बोलते हो, तो फिर क्या फैक्टर होता है जो आप देखते ही देखते हो कि ये तो होना ही चाहिए? यूजुअली ऑफ कोर्स मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, दैट्स द मेन थिंग, एंड या सेम, the word should make sense, the song should make sense, and I should connect with it. So I really connected with it. Of course, like I said, very relatable topic, closure. So yeah, just said yes to it. Okay. Yeah. अच्छा, which kind of songs you as an artist, as a singer, enjoy singing the most and listening the most? So I like a plethora of songs. Okay, I listen to everything, almost everything. If you look at my Spotify, मेरा algorithm crazy है थोड़ा। मुझे classical music भी आता है, western classical भी आता है, hip hop भी आता है, सब आता है, like everything is there. But what I like to sing mostly is, of course, my favorite genre is love songs. I think romantic songs are my favorite. So because of course I get to express, and I like that soft side of singing. So that's my thing. Yeah. ओके बट लगा नहीं आपकी आवाज सुन के बुराई में कि आपका फेवरेट लव एंड रोमांस वाला है? इतना दर्द था आवाज में, बहुत ज्यादा No, दर्द था। that's one of the reasons. See, I mean, love it's either love or it's either the lack of love, but it has to do with love. राइट राइट। अच्छा, इज दिस द फर्स्ट वीडियो के जिसमें आपने एक्ट भी किया है? तलब में आई गेस आप उसका वीडियो मैंने देखा था, yeah. बट एज अ स्टोरी वाला पूरा वो इसी में है। Yeah, कैसा था? with like a co-actor and everything. This was हाँ the हाँ, first पूरा time. एकदम एज एन एक्टर यू आर आल्सो देयर। Yeah. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? So very nice actually, because the day I was supposed to go for the shoot, थोड़ा सा nervous था, because पहली बार ऐसा हो रहा था कि there'll be a co-actor and there'll be a set and crew होगा and everyone will be there. So I was a little concerned. I thought I'll give a ring to my sister. She's an actress. I thought I'll take some hints, but then मुझे लगा कि नहीं, सरप्राइज देता हूँ सबको, पर बताना नहीं किसी को. So I was very happy actually that Saregama in the current times they approved कि हाँ सिंगर जो है उससे ही एक्ट कराते हैं, because we are in the times of influencers and actors
doing music videos. तो उसमें they showing that trust and belief in the artist that meant a lot. Yeah. So, but yeah, that happened. And Aditi Singh is my co-actress, and I think she's amazing. If you look at her other work, she's really good. And she was so sweet to me. She made me comfortable. She was like, nervous मत हो, just feel your song and do it. And I was like, okay, cool. ओके अच्छा वी आल्सो हेयर कि कई जगह पे ऑडियंस भी ऐसे बोलती है कि एक ही बंदा सारे काम करता है ना, इसलिए फिर क्या होता है कुछ भी ठीक नहीं होता, ये वो इस पे आपका क्या टेक है? नहीं ऐसा नहीं हाँ. है. अगर बंदे को काम आता है तो उसको करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. क्योंकि आप तो मुझे एज एन एक्टर भी ठीक लगे उसमें. Oh, thank you. सिंगिंग तो है ही बहुत बढ़िया. अ बिग लेबल लाइक सारेगामापा सिलेक्टिंग यू डिस्पाइट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो सोशल मीडिया पर भी हैं, जो अपने गाने खुद लॉन्च कर देते हैं. अब तो यू डोंट नीड एनी लेबल, खुद ही आप अपने सोशल मीडिया पे कर Yeah, सकते there are tools. Yeah. हाँ. तो हाउ डू यू सी दिस के एक बड़ा लेबल अभी भी अगर आपको एक सपोर्ट देता है, एक मौका देता है कि आप उस पे आओ, Yeah. तो एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू फील? No, it makes me really happy about the future, because the bigger people with more resources are going to get involved in this process, it will be better for the artists. Because artists को काम करना आता है. अगर mothership is supporting them, that's all that is needed. So it's really nice on Saregama's part, and I think it's very futuristic thinking how they are moving ahead in the current competition. So yeah, मतलब perfect है वो. I'm very happy that Saregama was on board with us when we said कि I would like to feature in the video and everything, because face value is something that we all want, and that happens for us playback singers. It's usually the voice that gets noticed, but face recognition later होता है. So at least with independent music, especially with a label, and they agree to put you in the video, that's like perfect. Okay, and how do you see independent singing? Independent singing, like As in could you elaborate? अपने ही Instagram प्रोफाइल पे या फिर अपना YouTube चैनल बना के any person can launch their own music. Yeah, of course. No, that is fantastic. So उसमें क्या now, लिबर्टी भी है? so I do that as well actually. A lot of that. And पहले मैं बहुत active था उस field में. But तो उसमें क्या है, challenges हैं of course, because we don't get the kind of budgets you require for marketing. Marketing is a big chunk of anything right now. But everything can be done. I make my own music. I get it arranged. I hire sound engineers to do the mix, and फिर मैं थोड़ा बहुत shoot भी कर लेता हूँ, and I direct as well. So it's more of an interest thing for me to get involved in the visuals and sit with the script writing and everything. तो हो तो सब सकता है. Interest सबका अलग अलग है. Like I know a lot of friends of mine who are musicians, and they're like, नहीं भाई मुझे बस गाना गाना है, मुझे इस पे नहीं घुसना है, मेरे बस का नहीं है. But for me, it's like a nice challenge. And I'll tell you something. My first paycheck that I got, the first thing I bought for myself was a camera, because I wanted to understand how the whole thing works. And I think this is almost 15 years ago or something, but now it's making sense. It's all coming together, my interest and my knowledge about things. So बुराई is about heartbreaks and all. दिल टूटता है, क्लोजर नहीं मिलता. जो लिरिक्स हैं स्पेशली वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट बता दो कि मेरे में बुराई क्या है. कैसा आपको क्या कहना है इस वाली चीज़ पे कि अगर किसी को क्लोजर ना मिले तो बंदे को कैसा फील होता है? हाउ इट ब्रेक्स द पर्सन इवन मोर? I mean, it is the sad thing about life. You don't get to know the why for a lot of things, and that is the lack of closure, I think. But like even in the video we've shown it कि उसको नहीं मिलता है answer. I don't get the answer. So what am I doing in the end? I'm just packing those memories back in a box and keeping it aside and moving on. And I think that's the idea. It's okay. It's okay to go through things that are not good. But you should just know, deal with the situation in your own way. Let your emotions come out, and then move on from it. Because closure नहीं किसी चीज़ से मिल रहा तो you can't really force it out from anyone, right? So yeah, that is the truth. And Have you ever been through this feeling? of course, yeah. Like I said, होता है. अच्छा बट शाश्वत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है हर एक आर्टिस्ट ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील करी हो, बट इन प्रोफेशनल वे यू हैव टू पुट इट. गाना है तो गाने में ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वो सिचुएशन
से आप कभी गो थ्रू हुए हो, Yeah, of course. चाहे वो बहुत ही एक्सट्रीम रोमांटिक हो गया, फिर एक्सट्रीम एरोगेंस हो गया, फिर एक्सट्रीम सैड थिंग हो गई. हाउ डू सिंगर्स पुट देयर वॉइस, देयर इमोशन, मतलब हाउ डू यू गाइस प्रैक्टिस? So it's like a modulation technique. Like I can make it a nice soft मन के सर में, you know, like that. Or हाँ मैं गलत, like it's completely different, but it's just projection. And of course when you get into a song there's music, so you get into the vibe of it. और फिर हम लोग बहुत मस्ती करते हैं actually recording room. If you come for a session you'll see the singers enjoy so much when they sing a song. Of course if it's a fun song. If it's a sad song then you have to be in that zone. If it's a serious song you have to be in that zone. So that's the thing, you just adapt, you take some time, read the lyrics, get into the मतलब emotion. जैसी मैंने तो ये एक्टर की होती है वैसे. हाँ, and actually very similar because it's playback is like an acting job. Like for example, I did one session for A.R. Rahman sir in the movie Sanju. I sang the song Ruby Ruby in that movie. So since it is based on Sanjay Dutt, the movie, I had to modulate my voice a little bit like him, like how he would sing. You know, he is in his certain zone in the movie, and the song comes in, so I have to Ruby, 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 Ruby. So I don't know Sanjay Dutt sir, right? But I've seen a lot of his mimicries and people, and of course I've watched his movies. तो एक और है उनका, तो वो गाने में उतारना पड़ा, तो थोड़ा इनैक्ट करना पड़ा. एंड आई डिड फ्यू टेक्स ऑफ ट्राइंग आउट कि सर शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट. देन या ऑफ कोर्स द कंपोजर गाइड्स यू कि हाँ इस डायरेक्शन में जाओ, एंड दैट्स व्हेन इट कम्स आउट. ओके. अच्छा, अभी आपने हाँ मैं गलत के एक लाइन गाई थी, कैन आई हियर इट अगेन? या अ बिट मोर. श्योर. हाँ मैं गलत, गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी, पूरा सही कोई नहीं है, ले मेरी चेतावनी, दिल में जो आए आज हो जाए, दिल में जो आए आज हो जाए, आज स्टेज लगा है बड़ी जगह है, डू इट विद अ ट्विस्ट. लवली लवली. अच्छा, सेम है, मतलब जैसा आप ऑन स्क्रीन सुनते हो, जैसा आप Spotify पे सुनते हो, वैसा ही सेम है. अच्छा, हाउ डू यू सी दिस, क्योंकि मैंने कहा द वॉइस इज एक्चुअली सिमिलर, हाउ डू यू सी दिस ऑटो ट्यून थिंग? हाउ मच इट चेंजेस और यू नो polishes your voice? See, or I'm also a technical guy, so I'll give you a technical answer. Okay. Auto tune का काम बस ट्यून करना नहीं है. Auto tune was of course it came to fix the little bumpy notes here and there, but in today's time everything has gone digital. Earlier we used to record on tape, या फिर एनालॉग गियर होता था, जो कंसोल होता है, जो चैनल्स होते हैं जिसमें, तो वो डिजिटल अब आता है. तो उसका एक पर्टिकुलर साउंड है. व्हेन यू आर इवन प्रोड्यूस करते हो ना, जब आप कुछ किसी ट्रैक को, अब क्या है कि पियानो अगर बजाना है तो वी हैव सच एनहेंस्ड साउंड्स in your laptop that it will sound like a real piano, but it's actually from the laptop. Piano हो गया, bass हो गया, drums हो गया, you can program everything and it sounds very real. So now to put the voice in the same soundscape, there is a little effect of autotune that is supposed to be added so that the voice gels in the overall sound. नहीं तो एकदम से अलग लगेगा और listener को भी अच्छा नहीं लगेगा. आई एम टेलिंग दिस टू यू, अदरवाइज लिसनर को बस ये लगेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, उनको समझ नहीं आएगा हुआ क्या. सो ऑटो ट्यून इज अ टूल. ऑफ कोर्स अ गुड सिंगर डजंट रिक्वायर ऑटो ट्यून, दे विल सिंग द करेक्ट नोट्स ओनली. But when it comes to the movies, when it comes to songs that you release, because things are coming out on audio platforms, उसमें भी देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन. जब आप किसी चीज़ को अपलोड करते हो उसका क्वालिटी चेंज होता है, फिर सुनाई देता है. तो वो सब कुछ अब इस तरीके से बन चुका है दैट वी नीड दैट टूल्स. एंड ऑफ कोर्स कोई उसको क्रच की तरह यूज़ करे देन इट्स अ प्रॉब्लम. आप सहारा नहीं ले सकते कि मैं बेसुरा गाऊंगा फिर ऑटो ट्यून उसको ठीक कर देगा. that is stupid. So that doesn't make sense. But yeah, a lot of people do it. Like अभी किसी को, अगर किसी का मेन स्ट्रीम काम नहीं है गाना, but say they enact in the movie कि
इनकी आवाज़ में ही करना है, it is so easily fixable. So I think it is high time that one should just like this topic of auto tune should stop. I खत्म feel हो जाना चाहिए। you because बट it's ऑल्सो दिस निकिता गांधी से हमारा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा हाँ, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि पहले लाइक पीपल आजकल लोग कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑटो ट्यून को, तुरंत ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं किसी भी आर्टिस्ट को। पहले होता था कि सब लाइव सिंगिंग, सब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उसमें लाइव एक सिंगर गा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबकी तरफ से कहीं से भी हो सकता है, तो इट्स ऑल यू नो, आप जो भी सुन रहे हो वो रॉ सुन रहे हो। लेकिन जब अब म्यूजिक इतना एनहांस्ड है तो आपको वॉइस को भी तो एनहांस करना पड़ेगा। exactly yeah that's This is what- same thing. To This- gel up. to make it sound like one. या It's required. कंप्लीटली Yeah. तो अभी टॉपिक ऑटो ट्यून का खत्म हो जाना चाहिए। It's I mean yeah you can troll but don't troll because now we know what it is. ओके, अच्छा शाशु, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, Yeah. कैसे मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, सिंगिंग कैसे आई लाइफ में? हमेशा से वाज दिस द प्लान और वाज देयर एनी प्लान बी और एनीथिंग? There was actually there was actually no plan B. I wanted to be in the military. I've grown up in the Kant area. So you know, a little incident I'll tell you. I was a little kid. I used to stand outside my main gate. और कारगिल के टाइम पे मेरे घर के सामने से बुफोर्स निकलते थे because they were being transported to Kargil and Allahabad, New Kant, now known as Prayagraj, New Kant. It is a huge artillery base. So I have always seen that. मेरे घर के बगल में ब्रिगेडियर रहते हैं, so I was friends with the guards over there. Every evening, like this little boy goes to the guards and checks out the guns and you know all of that. So it was a different time. I really wanted to be in the military, and then I had an injury in school, ACL rupture. So that's one injury. If you have, you cannot even go because that's like a no in the medical test itself. So my mother was very happy कि अब मिलिट्री में नहीं जाएगा ये। ओके, अच्छा हाँ, मुझे थोड़ा सा लगता Yeah, होगा। माँ है थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हाँ। But music was always a constant since childhood because my grandmother, who I've never met, she passed away before I was born. She was an artist. She used to sing really well. She used to play the sitar. She used to dance, and that I think came into my mother because she used to sing. She didn't dance, but she used to sing, and I got it from her. So it was more like a natural thing, understanding harmony, understanding melody, feeling emotion when you listen to something nice, you know. So of course mom and dad, when they used to play old songs or listen to any music, मज़ेदार म्यूजिक भी सुनते थे वो, रामबा हो everything used to happen in the house. So I grew up in that atmosphere. And then there was a spiritual side in the family, so there were a lot of bhajans and pujas used to happen. That's how I got trained into classical, without understanding, without sitting and doing riyaz, but just being a part of what was going on around me. Music was always there. ओके, एंड हाउ इट केम प्रोफेशनली कि हाँ ये करते That हैं? just happened because I was then once I got through my BCom, Yeah. I was in this turning point of my life where my family is like just waiting, क्या करेगा अभी, क्या करने वाला है? And my brother was like, okay, तुमने BCom किया है, why don't you do CPT and start preparing for chartered accountancy? I spoke to a few friends of mine who were preparing and they were so upset in life. I was like, भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा. And I requested my family. I was like, guys, music is what I know and I would love to try it out. And thankfully, although I come from a academic family, dad was a doctor, mom was a teacher, they supported me because they were like, कर लेता है, गा लेता है, decent गा लेता है, so let him try, let's see what happens. And thank God for that because then they let me free and I moved to Chennai. I joined A.R. Rahman sir's school, KMMC, KM Music College Conservatory. And that's where when I entered that school, you know, my first memory, it's still very fresh with me. I entered and there was a piano playing somewhere and there was a violin sound somewhere and then there was someone singing in some room and this was all happening simultaneously. I was just blown away. I was like, ये atmosphere ही चाहिए मुझे. So I told my dad, okay, I promise you this is the last expense you're going to make on me. Just get me in this college and I'll take care of it. तो उस टाइम पे कभी AR रहमान से मुलाकात हुई? नहीं, एक्चुअली मेरा कुछ भी प्लान नहीं था वैसा.
मैं थोड़ा इन द मोमेंट टाइप वाला इंसान हूँ. So I never like made a strategy or a plan that I'll do this and that and then eventually I'll end up working with the music directors. No, nothing like that. वो क्लासेस हो रही थी, मैं क्लासेस में जा रहा था, सीख रहा था, म्यूज़िक थ्योरी सीख रहा था, वेस्टर्न क्लासिकल थ्योरी सीख रहा था. फिर उससे बताया गया कि देयर इज़ अ choir audition going on, so there was a choir of 60 to 100 kids. I became a part of that. That choir started going into the studio to do background music for Rahman sir. We used to sing a lot of background stuff. तो एक आदत समझ में आ गई, माइक ये है, स्टूडियो कंसोल वो है, साउंड इंजीनियर वो है, माइक से ये डिस्टेंस रखना है, प्रोजेक्शन क्या है, सब चीज़ें क्लियर होने लगी ऑटोमेटिकली. यू नो, व्हाइल आई वाज नॉट रियली वरीड अबाउट मेकिंग दिस अ प्रोफेशन और समथिंग, आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू what my professional life is going to be. I was enjoying my college time, just learning. And वही हो रहा था. फिर मैंने आसपास के स्टूडियोज़ में जो कंपोजर्स थे, चेन्नई के लोकल कंपोजर्स, आई वेंट टू देम, आई टोल्ड देम, लिसन, आई एम लर्निंग, सो आई विल सिंग फॉर फ्री फॉर यू, ओके, एंड आई विल प्रॉब्ली pronounce it wrong, your language, so help me fix it. And आपको रफ गवाना है, आप रफ गवाओ, जो करवाना है करवाओ, I just want to sing. So I started doing these small recordings here and there. Then eventually in 2000, I think 12 or 13, that's when I met Shankar Tucker. He was a YouTuber. He was one of the initial YouTubers who were making really good music on YouTube, right? And he contacted me and he was like, I wanted to record a song with you. I'm like, sure man, let's do it. And he's from the US. बहुत मज़ेदार था वो. उसको मैं जहाँ से पिकअप किया, फिर उसको रोड क्रॉस कराई, उसकी हालत ख़राब हुई कि इंडिया में ऐसे कैसे रोड क्रॉस कर. तो it was a good experience for him also. Then we did this, song came out, became viral. Then I started getting calls from थोड़ा more, you know, कि नहीं, we'll release the song, no more rough and all of that, let's record you and let's do it properly. So slowly that started happening. And one day AR sir called me for a dub. Like I got a call from the studio, not AR sir himself, from the studio कि एक background का chorus का recording करना है, आप आ जाओ. I went. So my colleague Abhay Jodhpurkar, he's also a brilliant singer. He was there and I was there. So it was just the two of us. It was a two guy chorus. I sang and Rahman sir was recording that day. Okay. So because he was very sure about what he wanted in the song. It's from this movie called 24. So Benny was the main singer. Abhay and I were singing the chorus parts. Benny Dayal. And तो मैं गाया उसके साथ हो गया, सब हो गया. He was happy and then he said, okay, I've never heard you sing. So sing something for me. I got nervous. I mean, मेरे को पहले लगा मैं कुछ एकदम अच्छा वाला कुछ प्रेजेंट करता हूँ, बट मैं नर्वस हो गया. आई डिड नॉट डू अ गुड जॉब. एंड देन ही लाफ्ड एट मी. ही इज लाइक, ओके, रिलैक्स, काम डाउन, ट्राई अगेन. एंड देन आई sang the song called You Raise Me Up. And he was like, okay, thank you. Then he just left. It's okay. I was like, I think this is it. This is the end of my career. And I goofed up in front of the man himself, and there's no coming back from it. But surprisingly, I don't know what he heard, what he wanted, how it impacted him, but he called me some 2-3 months later. Again, from the studio, I got a call that there is a Skype session that you have to come for. So when I went for the Skype session, Imtiaz Ali sir was on the Skype session. And he said, hi Shashwat, I heard you're from Allahabad. And I'm like, yeah. I was first तो मैं जब कोई आपको जानते हैं तो और ज़्यादा. नहीं, उनको of course वो स्टूडियो वालों ने brief दे दिया था. तो I figured that this has something to do with where I come from. And that's when he said he wanted the singer in this particular song that he wants to record to understand the local language of Allahabad and slightly Awadhi mixed. I was like, yeah, that is okay. That's like my speaking thing. I can nail it for you. Don't worry. Also because we were doing this in Chennai. तो उनको लगा कि सर के स्टूडियो में सब, because everyone's a South Indian mostly. So maybe in language को अच्छा कैसे करना है. So they were very sure कि इसी से गवाते हैं. I was like, Imtiaz sir, don't worry, I'm going to do it.
and that was the recording for Wat Wat. I was not sure if it's going to come out, what was going to happen. Nothing. It was just few days before the release I got to know, and kind of released on my birthday. And so my first song came out like that, and that was it. That was the beginning. ओके और ऐसा कौन सा अभी तक गाना रहा है जैसे गा के होता है ना फुल फिल्मेंट वाली फीलिंग आ गई? रॉकी रानी में मैंने सारेगामा कारवा मेडली जो है, एंड इट्स अ बंच ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स टुगेदर. सो उसमें रॉकी रानी की प्रेम कहानी इज द नेम ऑफ द मूवी, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट. So I got to sing these old songs which I have always loved, and surprisingly the songs that I've sung in that medley are the songs that I have really loved as a child and what I used to hear. So I felt I manifested those songs in my career, you know, kind of. And it was the exact same songs. I was like, okay, perfect. So I really had a great time. It was like a full circle for me, you know, when I recorded those. And yeah, when it came out, and then there was a lip sync with Dharmendra ji as well in the movie. That was it. And I was like, okay, हो गया ये तो अच्छा, ये अच्छा हो गया. लवली. अच्छा अभी तक डुएट किसके साथ सबसे बेस्ट गाया? कौन सा मेल लीड सिंगर और कौन से फीमेल? Like my song, okay. I actually like all my वन co-singers. जिसके साथ एकदम सबसे ज्यादा I can't- बॉन्डिंग अच्छी बैठी हो, एकदम ट्यूनिंग अच्छी बैठी हो? I think audio-wise, I would again say Saregama Karma medley. Jonita has sung the female part, and she's sung it phenomenally well. And she's a brilliant singer. So every time I sing a song with her, it's really nice. Then Nikita ke saath I release a lot of songs, independent songs as well, and some label songs. So yeah, it's hard for me to pick one. All my co-singers एंड are brilliant. मेल सिंगर्स? Arjit Singh, of course. the Okay. Best co-singer ever. ओके. अच्छा कोई ऐसा है फीमेल सिंगर या मेल सिंगर जिसके साथ अभी एक विश है कि इनके साथ डुएट गाना है या फिर? So, I have to tell you this biggest, actually, amazing thing that happened was Sunidhi Chauhan and I on the same song, Show Me the Tumka, you know. So that was a big thing for me. Because मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ उनको, and then I got to sing a song with her. मैंने उनको लिखा Instagram पे भी, she was like, you're really sweet, thank you. मैंने बोला, I'm a big fan, I can't believe I have a song with you now. So yeah, that was there. But okay, let's see. Who would I want to sing a song with? It's fine. Everyone's fine. Anyone. Can't pick anyone. I can't pick anyone. Not. I can't take one particular name. We've had so many collaborations actually. You know, I've sung with Ash also, Ash King. I've sung with Abhay. I've sung with Arijit, Nikita, Jonita, Anandi, Joshi, Sunidhi ma'am, of course. Who do I pick? It's hard to pick. If you can throw some options at me, maybe then I can choose. What? मतलब अगर रोमांटिक में या फिर अच्छा गाने का भी तो अलग अलग जॉनर होता है कि Yes. कोई भी आप पिक कर सकते हैं. श्रेया घोषाल इज देयर, रेखा भारद्वाज इज देयर, शिल्पा राव इज देयर. Very good point. I want to sing a song with Rekha ma'am for sure. I've recently done an interview with her. Oh, her voice is Sufi. And her husband's voice, oh my god, Vishal ji. Both. of them. I really wish to have a song with Vishal ji as well, you know. But yeah, of course, Shreya Ghoshal is the epitome of, you know, female lead singing. Then, yeah. सभी हो गए फिर अभी सभी हो गए. मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मैं कोई एक नहीं चूज करता. I want all of these. ओके लास्टली व्हिच एक्टर आपको ऐसा लगता है कौन से एक्टर पे कौन से फेस पे आपकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है? I think Ranbir Kapoor, because I've sung the most number of songs for him. What a brilliant actor as well. So I'm a huge fan. So definitely him. And I am 100% sure that my voice will be really good on Shah Rukh Khan sir as well. So whenever that happens, I'm trying to manifest it. ओके वी होप ये बहुत जल्दी हो. Thank you. नेक्स्ट क्या आ रहा है? Next, well, there's another song in the pipeline. I'm starting a duo with a co-singer. So that's going to happen. And a lot of songs are going to come out. 24 and 23 were full of recordings.
तो आई एम होपिंग मूवीज आर गोइंग टू बी रिलीजिंग मोर इन 25 एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. ओके अच्छा जाते जाते एक गाना तो बनता है क्योंकि रणबीर कपूर का आपने नाम लिया तो एक गाना होने का. श्योर. प्यार मैंने जो निभाया तेरे रहते तेरे साथ ही, सच कहूँ तो तुझसे ज्यादा चाहा तुझको तेरे बाद ही. हूँ मैं दर्द हूँ तू दवा है ना, मैं आग हूँ तू हवा है ना. अली 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 से अली 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 से कहाँ है तू, मेरे दिल में है ना. लाउडली थैंक यू शाश्वत हमसे बात you. करने के लिए Thank you so और much. बुराई के लिए फिर से एक बार कंग्रेचुलेशन. सबको बहुत अच्छा लगा और आपको बुराई कैसा लगा कमेंट में बता देना और इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा वो भी कमेंट में बता देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.